Good morning, students. This video session is for class 2nd students. Subject Reasoning. Chapter number 16. And the name of the chapter is Insects Word. Lecture number 1. So, beta, today we will learn insects name. Okay. In this reasoning lecture, we will learn about the name of insects or insects name. So, let's start. In these type of questions, we have given the names of insects in fill-ups form, and we have to fill the blanks to complete the name of that insect by choosing correct option. ठीक है, रीजनिंग में बेटा इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें इंसेक्ट का नाम दिया होता है, ठीक है, बट वो कंप्लीट नहीं होता, फिलअप्स की फॉर्म में होता है, एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट, और हमें उन फिलअप्स को फिल करना है उस इंसेक्ट का नाम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एंड वी हैव ऑप्शंस, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम देम. अंडरस्टूड बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इंसेक्ट का नाम दिया होगा फिलअप्स की फॉर्म में, ठीक है, और फिलअप्स में हमें फिल करना है उस इंसेक्ट के नाम के जो अल्फाबेट्स इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. ऑप्शंस आर देयर. Okay, we have to choose the options and then we have to complete the name of that insect. So let's do with an example. Here it is given direction. Fill in the blanks. Following word is related to insect word. Okay. So beta, in this example we have to learn that how we can fill the blanks to complete the name of that insect. ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, और जो हमें वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर डैश डैश ए एस एस डैश ओ पी डैश डैश डैश. Okay, this is the name of an insect, okay, and we have to fill in these blanks, okay, and our options are A C D P E R, B option है हमारे पास G R P P E R, okay, and C option है G R H P E R, and D option is G A P P E R. Okay, now what we will do, we will start from option number A. So here in option number A it is given first word A and second word C. So we will put A and C here and let's see what the word will become. A और C जब हम यहाँ पर fill करेंगे, then our word will become Achis, and Achis जो है वो हमारा कोई भी word नहीं होता है insect में, ठीक है. So we will leave this word, okay, this option. Now in B part GR हम यहाँ पर fill करके देखते हैं, GR ASS, that becomes grass, okay, and grass तो हमारा insect word से related है, so grass, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं हम पी पी, तो यहाँ पर अगर हम पी लगाएंगे तो बन जाएगा पॉप, ओके, एंड ग्रास पॉप तो कोई वर्ड नहीं होता है, so we will leave this option. Now we have to fill option number C here. G R ASS, grass बन रहा है हमारा, then HOP hop, then PER, PER जब यहाँ लगाएंगे तो हमारा पूरा वर्ड बन रहा है क्या? Grasshopper. So let's write this option number C here. First we will write G, then R, okay, and the word become grass. Now H O P is given, then P E R, and the insect name is grasshopper.
It means our option number C is correct. Okay, so here we need to write its answer. Option C is correct. Understood, beta? How to fill the blanks to complete the name of the insect. Okay, now homework, fill in the blanks. Each word is related to insect word. ठीक है, जो भी वर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो आपने फिल करना है वो इंसेक्ट वर्ड से रिलेटेड है. So in question number 1 it is given M dash dash Q dash dash T O. Okay, and our options are A O S U I. Okay, and then in B A S U T, in C O S U E, and in D A S U I. So you have to fill these options in these blanks and then come to know which option is correct. Now question number 2, W dash dash P A O S, B A S, C O R, and D R A. Okay, you have to fill the blanks and come to know that which insect name is this. Okay, now in question number 3 it is given CAT dash 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 L dash R. Okay, and our options are A ENTELA, okay, and B ONPISA, C ODPRLA, and in D ERPILA. Okay, now in question number 4 it is given B dash dash, A option है double A, ऑप्शन नंबर बी में है डबल वाई, ऑप्शन नंबर सी डबल ओ एंड ऑप्शन नंबर डी डबल ई. Question number 5 is B dash dash T dash dash. Okay, options are double ELE, B option is double OLA, C option is EALE, and D is triple AL. Okay, so you have to fill the blanks, okay, to come to know which insect name is this. Okay, beta. Now homework solution of chapter number 15, water image, lecture number 18. I had given you sums related to water image, so let's its solution. Homework solution, question number 1. Here B letter is given and this is the water. Now we have to see the water image of this. So our options are A this, B this type of B, C this type of B, and D this type of B. Okay, and our solution is, now we have to see that which option is correct when we will see the given alphabet B in what. It will look like option number C. ठीक है? How beta? Ma'am has told you earlier that in water image our bottom becomes top and top becomes bottom. जो हमारी टॉप पे जो चीज होती है वो बॉटम पे आ जाती है और जो बॉटम वाली होती है वो टॉप पे चली जाती है. ओके, सो लेट सी हाउ वी विल लुक बी इन आवर वाटर इमेज. इट लुक्स like this. Okay, and it is in option number C. That's why option number C is correct. So here we will write option C is correct. Okay, यहाँ पर क्या डिफरेंस है बेटा? हमें ऑलमोस्ट ये सेम लग रहा है, बट जो ये ऊपर वाला B का पार्ट है ये थोड़ा सा स्मॉलर है नीचे वाले B के पार्ट से. ओके,
और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज बी. ओके, और बी को हमें वाटर इमेज में देखना है. ऑप्शंस आर ए like this, B like this, C like this, and D like this. Okay, now solution. Now we have to see that which option is correct when we will see the given alphabet B in water. It will look like option number D. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो ये पार्ट है बॉटम वाला वो टॉप में चला जाएगा और जो टॉप वाला है वो बॉटम में आ जाएगा. एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर डी लाइक दिस. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. F. Now we have to see the water image of F and our options are A like this, B like this, C like this, and D like this. Okay, so now we have to do its solution. Now we have to see that which option is correct when we will see the given alphabet F in water. It will look like option number C like this. So let's see. यहाँ पर हम देखते हैं बेटा F जो है हमें इस तरह से नजर आएगा. ठीक है. Yes. So option C is correct. So we'll write here answer option C is correct. Now question number 4. Here it is given alphabet N. Okay, and this is the water. Options are A like this, B like this, C like this, and D like this. Okay, now we will do its solution. We have to see that which option is correct when we will see the given alphabet N in water. It will look like option number B. Okay, so option B is correct like this. Okay, option B is correct. Now question number 5. Here it is given alphabet S and this is the water. Now we have to see what are the options given. Like this, B like this, C like this, and D like this. Now we have to see which option is correct. So solution. Now we have to see that which option is correct when we will see the given alphabet S in water. It will look like option number A. Okay, जब हम इस इमेज को इस वाटर में देखेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगी बेटा. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर A is correct. Thank you.